नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अ, अस्माभिः गतकक्षायां मूल प्रत्ययः तस्य उदाहरणानि तस्य वाक्येषु अ, उपयोगः अपि दृष्टः। ततः तृच् प्रत्यय यथा रक्षितृ रक्षिता, गन्तृ गन्ता, खादितृ खादिता इत्यादिकं तृच् प्रत्ययान्तं रूपमपि दृष्टं। So like Pitru also, Pitru, Matru. No, the Krudanta pratyas work along with the dhatu. So there should be dhatu, the root should be there, and along with that root, trich pratyaya would be added. So pitru and matru, So Pitru, hmm, yes, they are not a Trich Pratyaya then. huh. They are not, the dhatus are not there, but still I will find what pratyay would be added to that, and it is a trich pratyayanta form only. I have to get clarity more about that, then I will explain in next class probably. So basically trich pratyas are added along with dhatus. Pa pati, there is a dhatu, pa to protect. So along with that, pitru shabda can be made. Ma, mati. There is another dhatu ma mati, but I don't see the clear meaning of ma. Mati means to measure. Matru shabda mata, one who measures is called mata. There is a word, there is a matru pratyay also, truch pratyay is added to that, but the meaning is one who measures. It's called mata. Mata, mataro, matarah. That is different. And matre shabda is different. I will search the meaning, then I will let you know. Okay. Truch pratyay we have seen. Nul pratyaya, lu pratyaya, mini pratyaya, ach pratyaya, all these pratyaya, krudanta pratyas we have already seen. There are many more krudanta pratyayas, but I think whatever is important, I have already covered. Apart from krudanta pratyayas, there are some other pratyayas which are directly added to the dhatu. So some of them we will see. So let me share the slide. Today we will see sannanta pratyaya. You remember the rules of tumun pratyaya, right? How do we use tumun pratyay in sentence? In one sentence, you can you make? Ramaha, Ravanam, Ravanam Hantum, Lankam Gachati. Hantum lankam gach. So basically, here there is a karta, Ram. He has desire to kill Ravan. So basically, the subject of desire is Rama, and he is performing two actions simultaneously together. Ramah, Ravanam Hantum. So Hananam is one Kriya and Gamanam is another Kriya. So two Kriyas are performed by Rama, Hananam also and Gamanam also. And subject is the same. So here we are going to see Sannanta Pratyaya, which will indicate the same meaning. Rather than using Tumun Pratyaya, even we can use Sannanta Pratyayas and we can form the sentence. Let's see the sutra and the usage also. By looking at the in those forms, you will understand the meaning also. For example, there is a sutra dhatu karmana samana kartrikadichhayam va, means what? Ishi karmanah इशिनैक कर्तृकाध्यातो सन प्रत्यय वा स्यात् इच्छायाम, means what? So any dhatu can get san pratyaya, but when there are two conditions. Condition is if that dhatu, particular like patitum,
is a dhatu. Patitum, patha dhatu is there. If that patitum or patha dhatu is the object of ichchati, and the same karta is performing that action. For example, Ramah patitum vidyalayam gacchati. अथवा रामः पठितुम् इच्छति. Let's take रामः पठितुम् इच्छति. Now, pathanam and ichcha are two kriya padas, and one who is actually desiring, Rama is desiring, and what he is desiring to do pathanam. So that pathitum or that patha is the object of ichcha dhatu, and the Rama is a subject of that same dhatu ichchati. है ना. तो इच्छति धातु का कर्ता है राम, और उस इच्छति धातु का कर्म है पथ. तो वैसा यदि हमें यहाँ तुमुन प्रत्यय में मिलता है तो वहां सन फॉर्म हम यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल पठितुम इच्छति, इट बिकम्स पिपठिष्यति. हाउ इट बिकम्स? सो बेसिकली पथ धातु मेन रूट इज देयर. बाय धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा अनेन सूत्रेण, बाय दिस सूत्र we will bring san pratyaya. Nakara will get its sajna, only sa will remain. Okay. Then this sa pratyaya is called ardha dhatuka pratyaya, and by ardha dhatuka sed valade hai, by that sutra idagama will happen, I agama will happen, and it will become patha is. Second step, patha plus is. Then dhatoh dvitvam will happen. There will be dvitvam like a pat is. This is how the kriya pada, the root will get dvitvam. Only pa letter will get dvitvam by sanyangoho. Then there would be ikara adeshah in this front page. Pipatish it will become. Pipathis it will become. And because of this ikara, that sakara is going to get shakara. Pipatish, then the ti pratyay etc. will be added. Pipatishati. Now how it is, becoming patha becoming pipatishati, that is a lot prakriya. There are many sutras. So rather than going deep into the sutras, I will directly let you know the ultimate forms and their uses. So basically we are going to use only ultimate forms, right? Their uses. I just have one question. That patha plus okay, patha plus is, and then you added extra pa to patha. Why? How? That I didn't understand. There is a sutra sanyangoho sannantasya yagantasya. If basically this pratyay is sannanta pratyay now. Okay. Patha is अथवा patha san is a sannanta pratyaya. So sannanta form if you are finding, tada dhatoho anabhyasasya prathamasya ekachah dve sah, means what will happen? Dvitvam will happen. So basically pat. So वहां द्वित्व होगा, ठकार का लोप हो जाता है, केवल प उसका ही द्वित्व होता है. पट इस ऐसा बन जाता है द्वित्व होकर के by this sutra. Then that pa will get idagam I adesha, it will become p. Pathi, sa will remain. Then sakara changes into sha because of there is a ikara adesha pratyayo. By that it changes into shakara. Then titah anti those pratyas will be added. Okay. So similarly, along with all the dhatu, the usage we will see now. Basically, arch dhatu is there. Whenever you want to form a sentence by saying architum ichchati, aham ramam architum ichchami. Rather than saying that, if you say aham ramam archichishami, it is also good. It is also, little bit high stage or higher stage, we can say. Architum ichchati, archichishati. Aptum ichchati, ipsati. Patitum ichchati, pipatishati. Athva advetum ichchati, adhijigam sate. How it becomes, there are lot prakriya.
So we will not go through this prakriya, but we will try to make sentences by using these forms. Okay. So if you are comfortable with any dhatus, dhatus, you can make sentences by using tumun pratyaya as well as sannanta pratyaya. Meaning you know, right? Meaning you know. Desire to say, desire to obtain, desire to worship, desire to cross, desire to know, like that. So बालः सन्देशं पठितुमिच्छति. सो बालः सन्देशं पठिष्यति. पठिष्यति. Basically, if you are directly saying balakah sandesham pipatishati, means the child is desirous to read the message. Pipatishati. ते सेवां चिकीर्षति. मतलब सेवां कर्तुम् इच्छति. सैनिकः देशसेवां चिकीर्षति. सैनिकः सेवां कर्तुम् इच्छति. अहं देवं अर्चिष्यति इच्छामि. अर्चिष्यामि. Oh, अर्चिष्यामि. Okay. So I don't have to add one more verb there. Just I can say, because if I say aham devam architum ichhami, here aham devam archachishami. Ichhami. Ichhami I don't have to use. Here in this case, sannanta pratyaya, we don't use that ichhati, kriyapada, etc. अहं जलं पिपासामि. अहं जलं पिपासामि. अहं aham pipatishati. I want to say when I am walking, I fell. When aham, I don't know how to say, while walking, I fell. Pipatishati. No, this is, I want to fall down. Okay. So you want, that? Aham pipatishami. I desire like that. Oh, that's not good. Aham ninrutsami. Ninrutsami. Aham mataram ninamsami. Nantum ichhami. I am desirous to say. Sorry. Done. My sentence is done. अहं प्रश्नं उसका कैसे आएगा? प्रीपृच्छामि. Where is प्रच्छ धातु? हाँ, प्रच्छ इधर ही है, पहले लाइन में, थर्ड वन, टू आस्क. पृच्छिष्यामि. पृच्छिष्यामि. Difficult to say. अहं प्रश्नं पृच्छामि. Shami. Yes. We'll go. Aham samsarat
मुमुक्षामि, I don't know. अहम संसारात् मुमुक्षामि, मुमुक्षामि मोक्तुम् इच्छामि। अहम आत्मानं स्वात्मानं संसारात् मुमुक्षामि, अथवा मुमुक्षे, आत्मनेपदी इज धातु, द मुच धातु इज Yeah. आत्मनेपदी। मुमुक्षे, अहम आत्मानं संसारात् मुमुक्षे। Mumukshe. So युयुत्सवा इज ऑल्सो सन्नंत फॉर्म होगा क्या? समवेत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः। That is the word actually. From that Sannanta form, the name noun is made. Yuyutsate, if Okay. yutsate, then that is a kriya pada. If it is yutsuhu, like similarly mumukshuhu, mumurshuhu, iyati, हाँ. those will be nouns. इनसे ही हम नाउन सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि पिपठिशुहु, मतलब पढ़ने की इच्छा जिसको होती है वो वाला व्यक्ति। हाँ, पिपासुहु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। हम्म, जिज्ञासु होता है ना। जिज्ञासुहु, राइट। हम्म, क्रमेण गच्छामः। रामः शिवम् अर्चितिषति। भगवान रामः शिवम् अर्चितुम् इच्छति। धातु आपनोति, टू ऑप्टेन, डिजायर टू ऑप्टेन, ईप्सति। अस्य वाक्यम्। अहम संस्कृत भाषां पठितुम् इच्छामि। पठितुम्, तुमुन् प्रत्यय we cannot add, directly we can say पठित। So how do I say? अहम संस्कृतम् आप्तुम् इच्छामि, अहम संस्कृतम् ईप्सामि। ईप्सामि, वाव। अधिजिगांसते, अधिजिगांसे, अहम संस्कृतम् अधिजिगांसे, अथवा अहम संस्कृतम् अध्येतुम् इच्छामि। लाइक दैट यू कैन से बोथ वेज। अहम संस्कृतम् पठितुम् इच्छामि अथवा अध्येतुम् इच्छामि। अहम संस्कृतम् अधिजिगांसे, लाइक दैट। बालकः कथां ची ची कथयिष्यति। ची कथयिष्यति नाम बालकः कथयितुम् इच्छति, he wants to story। कंप, वृक्ष वृक्षाः चिकम्पिष्यन्ते। चिकम्पिष्यन्ते, साधु। कुप, माता दुर्वास ऋषिः, दुर्वास ऋषिः, दुर्वास ऋषिः, दुर्वास ऋषिः शकुन्तलासु चूकोपयिषति। शकुन्तलायै चिकोपयिषति, चतुर्थी। शकुन्तलायै, हाँ, तलायै, सॉरी। अग्रिमं कृ करोति, सिंपल। कर्तुम्, अहं संस्कृत पठनम्, अहम संस्कृत पठनं चिकीर्षामि। अहम संस्कृत पठनं चिकीर्षामि मीन्स व्हाट? अहम संस्कृत पठनं कर्तुम् इच्छामि। बालकाः सर्वदा किं कुर्वन्ति, किं कर्तुम् इच्छन्ति? क्रीडितुम् इच्छन्ति। चिकादेशति, क्रीड, चिक्रीडिष्यन्ति, चिक्रीडन्ति इति, चिक्रीडिष्यन्ति। खाद धातोः एकं वाक्यम्। अजा अथवा अजः सर्वदा अन्नं
चिखादिशति है कि नहीं? अजः अत्र जीगणम् इति न, किन्तु गोट. Trunam. Maybe we can say ajaha. अजः सर्वदा तृणं चिखादि. Trunam chikadishati. In his case, he don't only desire, he doesn't desire only trinam. Whatever comes in front of him, he just शुरू ही हो जाता है वो. गण, हम पुष्कलम धनम जिगणयिष्यामि. सह पुष्कलम धनम जिगणयिष्यति. गम धातु तुम इच्छति जिगमिष्यति. अहं भारतदेशे जीगमिष्यामि. अहं भारतदेशे भारतदेशं जिगमिष्यामि. चरधा चिचरिष्यति. प्रातः काले Aham चिचरिष्यामि. chicharishyami. उद्याने चिचरिष्यामि. I will walk. I desire to walk in the garden. Morning. At morning. दुर्जनाः चुचोरयिष्यति. धनं चोरयिष्यति. दुर्जनाः धनं चुचोरयिष्यति. धनं चुचोरयिष्यति अथवा चोराः धनं चुचोरयिष्यन्ति. चुचोरयिष्यति चुचोरयिष्यति. जनधातोः जिजनिष्यति. जि टू विन जिजयति. जेतुम् इच्छति. जिगीषा हम रखते हैं ना. खेळाडूला काय म्हणतात? क्रीडकः. क्रीडकः सर्वदा जिगीषति. जिगीषति. क्रीडकः सर्वदा जिगीषति. क्रीडकाः सर्वदा जिगीषन्ति. साधु. Well, what does that mean? I didn't understand what that means. क्रीडकः means player. Players always want to win. But jijanishate, you said to produce. No, I didn't use that. I just left that sentence. Oh, okay. Okay, sorry. Okay. जिगीषति. जेतुम् इच्छति. जिगीषति इति. जीव धातु जीवितुम् इच्छति. जिजीविषति. Do you heard the Ishavasya Upanishad? Neveha karmani. Jijivishan. The jijivishati is the dhatu. From that jijivishati, shatru pratyay has been used. Jijivishan shatagum samaha. Shatam samaha. Samaha varshani. Samvatsaraha. कुर्वन्नेवेह कर्माणि. इह जन्मनि अथवा इह मृत्युलोके यः कश्चित् आयाति जन्म प्राप्नोति. सः कर्म कुर्वन् एव. While doing his actions or his duty, he shall desire to live for hundreds years. So whoever has taken the body, or whoever has got this body, he has to perform his actions with the desire of living long life. Or whoever has that desire to live long life, he has to perform his duty. Then only his life would be, purposeful or success. Right. जिजीविषति. जीवितुम् इच्छति. मनुष्यः अथवा मनुष्याः शतं समाह जिजीविषन्ति. Means what? People desire to live for 100 years. 100 100 years ऐसा होगा क्या?
100 years ऐसा होगा क्या? 100 years ऐसा होगा? 100 years. 100 years. 100 years. अच्छा, ओके। ज्ञा धातु हो, ज्ञातुम इच्छति, सह ज्ञातुम इच्छति, शिष्यः ज्ञातुम इच्छति। शिष्यः जिज्ञासति। हम्म, जिज्ञासति। आत्मनेपदी धातु ज्ञा जानाति, आत्मनेपदी उभयपदी स्यात् कदाचित्। जिज्ञासते, जिज्ञासति, तत्वं जिज्ञासते, शिष्यः तत्वं जिज्ञासते, तत्वं ज्ञातुम इच्छति, द wants to know the supreme truth। चिकीर्षति, तरतुम ईर्ष्यति। there is श्लोक। Vrishabha, Vrisha. What is that? Vrishabha Nadim तिति। Titirshati. हम्म, Vrishabha is that बुल। wildebeest. Bull. वृषभः। साधकः संसारताग सागरं तितीर्षति। मोहात्, there is a shloka, I don't, दुस्तरम मोहात् तितीर्षुर, Vivek Chudamani or somewhere, I am not remembering the lines। हाँ, तितीर्षु, Kalidas only in Raghuvansham he says, first sarga itself, Titirshu river, Sagaram something. That line I am not remembering. Anyway, next. Tyaja dhatu, tityakshati, kita, tityakshati, त्यक्तुमिच्छति इति। सन्यासी अथवा यतिः कामक्रोधादीन् विकारान् तित्यक्षति। दह धातु, दिधक्षति, दग्धुम् इच्छति। अहम जनाः जनैः होलिकायां वृक्षः दिधक्षन्ति। कर्म जनाः जनाः होलिकायां वृक्षम् अथवा वृक्षान् दिधक्षन्ति। दा धातोः दित्सति, दित्सा अथवा दित्सु, देने की इच्छा वाला, दित्सु ऐसा कहलाएगा, देने की इच्छा दित्सा, और क्रियापदम दित्सति, दातुम इच्छति। अहम माता, अहम याचकेन दानं दित्सामि। अहम याचकाय दानं दित्सामि। याचकाय। हाँ, द्रष्टुम इच्छति, दृक्षते। द्रष्टुम इच्छति, desire to see। Aham शिशुं दिदृक्षे, दिदृक्षे। अहम शिशुं दिदृक्षे, अतः अहम तद्गृहं गच्छामि इति। I want to see the child, that's how I went or I go there। नि अहम मम शिशुं तस्मिन् गृहे निमिषामि, अथवा निमीषे, निमीषे वक्तुं शक्यते। I want to take that child to another house। नम धातो निनंसति,
नन्तुम इच्छति, to go down. Ninirshati is to lead, right? To lead, to carry, Okay. to take away. But Ninishati, it's like Narendra Modi, Bharat, भारत, Bharatiyan, भारतीय, Ninirshati. भारतदेशं भारतदेशं निनीशति. नम धातु, नृत धातु we already did. पच धातु did we did? No, we didn't. Did we do? No, we didn't. पिपक्षति, पिपक्षति अहम पक्तुम इच्छामि. भोजन न इच्छामि. इच्छामि, अहम न पिपक्षामि इति. अहम न पिपक्षे. किमर्थं न रोचते? भोजनम. पिपाक्षा न रोचते. पिपाक्षा न रोचते, पक्तुम् इच्छा नास्ति, पिपाक्षा नास्ति. अद्य पिपाक्षा नास्ति, कस्मात्? अद्य ईद् वर्तते इति कृत्वा पिपाक्षा. हाँ, पत धातु, पत धातोः पिपतिशति, पिपतिशा, पिपतिषुः, ऐसे भी अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं. पिपतिशति क्रियापद है. पिपतिशा पढ़ने की इच्छा, गिरने की इच्छा, और पिपतिषु जो गिरने की इच्छा रखता है वो वाला व्यक्ति. पिपासुः, पिपासा, पिपासति, है ना, ऐसे बन सकते हैं. पातुम इच्छामि, पातुम न प्रसवति, प्रभवति. शकुन्तलायाः वर्णनम् आयाति. पातुम न इच्छति, पातुम न प्रभवति, समथिंग समथिंग. I don't know. अहम चायम पिपासामि. चायम पिपासामि. प्रच्छ हो गया. बुभुत्सते. बुभुत्सते, desire to know. बुभुत्सा, बुभुत्सा. तत्वं बुभुत्से. तत्वं बुभुत्सा अस्ति, तत्वं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति, बोद्धुम् इच्छा अस्ति इति. ब्रु धातोः विवक्षति, मीन्स व्हाट? डिजायर टू. अहम श्लोकम विवक्षामि. हाँ, अहम श्लोकम वक्तुम् इच्छामि, विवक्षामि इति. साधु. or we can say that अध्यापकः पाठं where am I? विवक्षति. अध्यापकः पाठं विवक्षते. He has desire to explain the पाठ, explain the lesson. भू धातु भवितुम् इच्छति. अहम प्रधानमंत्री भवितुम् इच्छामि. हाउ टू से दैट? अहम प्रधानमंत्री बुभूषामि. बुभुक्षा इज बोद्धुम् इच्छा और भोक्तुम् इच्छा. बुभुषामि. बुभूषामि. अहम प्रधानमन्त्रीं मिलनं बुभूषामि. मेलनं बुभूषामि. न, बुभूषामि मीन्स टू बी. नो सॉरी, इच्छामि होगा ना, चिकीर्षामि होगा ना. शामी बन जाएगा उसका. जी. उच्च धातु टू रिलीज. मुमुक्षा, टू बिकम मुक्त, टू रिलीज समथिंग. ईश्वरस्य नामस्मरणं अस्माकं मुमुक्षामि. ईश्वरस्य नामस्मरणेन मुमुक्षामि.
हाँ, ईश्वरस्य नामस्मरण मुमुक्षामि मुमुक्षे। मुमुक्षे अहम ईश्वर नामस्मरणेन मुमुक्षे। आई वांट टू गेट मोक्ष बाय ईश्वर नामस्मरणम। मुमुक्षा मोक्तुम इच्छा मुमुक्ष। आत्मानं मोक्तुम मुमुक्षे आत्मानं ईश्वर नामस्मरणेन आत्मानं स्वात्मानं मुमुक्षे इति। ओके, आई वांट टू बी हैप्पी। अहम मुमोदिष्यते। मुमोदिशामि। न मुमूर्षति कोपि जगति जगति कोपि न मुमूर्षति इति। So all these dhatus you can practice. The time almost is finished. Rurudishati, desire to cry. Likh dhatu, likhishati, desire to write. Shtru dhatu, shushrushate, sushrusha. श्रोत मतलब